For the first time since India's independence, the Lok Sabha will hold elections to elect a speaker for the lower house after the NDA fielded Om Birla, 3-time MP from Kota, while the opposition India Alliance fielded 8-time Congress MP from Kerala, Kudikonil Suresh. The opposition selected Suresh to contest NDA's Birla after the BJP apparently refused to commit to giving the deputy speaker post to the opposition bloc. The election for the post will be held on Wednesday. Congress leader Rahul Gandhi stated that the India Alliance was ready to support NDA's candidate for the post of LS Speaker, provided that the government gave them the post of Deputy LS Speaker. Notably, BJP leader Rajnath Singh was holding talks with the opposition to build consensus on the Speaker's nomination. However, Congress leader KC Venugopal stated that there was no commitment from the ruling party on the Deputy Speaker's post. राजनाथ सिंह जी का खारगे जी को फोन आया। राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी से कहा, देखिए आप हमारे स्पीकर को सपोर्ट कीजिए। ऑपोजिशन, पूरी ऑपोजिशन ने कहा है, हमने सब के सब से बात की है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, मगर कन्वेंशन ये है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। राजनाथ सिंह जी ने कल शाम कहा था कि वो खारगे जी को कॉल रिटर्न करेंगे। अभी तक राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी का कॉल रिटर्न नहीं किया है। Meanwhile, condemning the opposition's move, the BJP MP Piyush Goyal stated that the speaker does not belong to any party or opposition and belongs to the entire house. Similarly, the deputy speaker does not belong to any party or group. एक पुरानी मानसिकता है कि हम डिक्टेट करेंगे टर्म्स को, उस मानसिकता को फिर से दिखाया गया कि नहीं, शर्त है कि पहले लोकसभा का उपाध्यक्ष कौन होगा वो पहले तय करें, फिर अध्यक्ष के लिए समर्थन मिलेगा। इस प्रकार की राजनीति को हम की निंदा करते हैं और मुझे लगता है कि अच्छी परंपरा ये रहती है कि लोकसभा निर्विरोध एक सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुनता, तो लोकसभा की भी मर्यादा अच्छी रहती, सभी पक्ष का उसमें योगदान रहता और स्पीकर वैसे भी किसी सत्तारूढ़ पार्टी या विपक्ष का नहीं होता है, वो पूरे सदन का होता है। वैसे ही उपाध्यक्ष भी कोई पार्टी या दल का नहीं होता है, पूरे सदन का होता है। Even though the opposition is contesting for the post of the LS Speaker, Om Birla would likely become the Speaker for the second term. This is because the NDA bloc has 293 seats in the 543-member Lok Sabha, while the Indy bloc has 234. The opposition would fall short of the required number even if the remaining 16 MPs choose to vote for India Alliance's nominee. Currently, Bhartuhari Mehtab is acting as the Speaker of the lower house after President Draupadi Murmu appointed him as the pro-term Speaker. This is the first time since independence that elections will be held for the Lok Sabha Speaker. Up till now, the Lok Sabha Speaker and Deputy Speaker have always been elected by consensus between the ruling party and the opposition. However, as the ruling NDA and the opposition reached no consensus, both blocs fielded their candidates for the Lok Sabha Speaker post.